I want to talk about one of the most inspirational leaders of all time, the person who created Apple as a company. Right? हम सब लोग जानते हैं कि स्टीव जॉब्स के बारे में बहुत सारे कहानी आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा, बट आज मुझे एक ऐसे कहानी बोलने की इच्छा है. वो कहानी है स्टीव जॉब्स की लाइफ की टर्निंग पॉइंट. व्हाट मेड दैट टर्निंग पॉइंट इन स्टीव जॉब्स लाइफ? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. So Steve Jobs, when he was very small, his adopted parents, his biological parents were different, but then he got adopted to two people, and वो जगह पे when Steve Jobs was living with them, they were very religious. उन लोग वो Christians थे and Jesus Christ में बहुत believe करते थे. And they used to be praying every day. वो नीस में खड़े होके every day they pray for before dinner, and they had instilled that in the mind of Steve Jobs that Jesus Christ is everything and God is everything. God is going to be always with you. And Steve Jobs was a very very nice kid learning all this. And इसके साथ साथ स्टीव जॉब्स की फैमिली ने उनको एक और आदत डाला था उसमें उनमें कि जब भी अगर आपको कोई डाउट है, राइट, ज़्यादा डाउट है जो पेरेंट्स नहीं बता पा रहे आपको, then you should be going and asking the priest in the church. So every Sunday after the mass, after the prayers, what happens in the church, if there are any doubts, Steve Jobs, if he had as a kid, he used to go to the priest and ask the priest as to what exactly is the reason why this has happened, this has happened. And Steve Jobs ki priest also liked it very much because a small kid coming and asking so many curious questions, of course, will make the priest very 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 interesting about this person. So one day, Steve Jobs, I think at the age of 10 or 11 in his book it is written that Steve Jobs एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा 10-11 साल की उम्र में. एंड 10-11 साल की उम्र में जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस दिन न्यूज़पेपर में एक पिक्चर आया था, एक फोटोग्राफ आया था. वो फोटोग्राफ में ये था कि साउथ अफ्रीका में कुछ बच्चे लोग, दो बच्चे लोग, they were having huge poverty. They had no food, no clothes. They were sitting on the road, on plain land without any clothes, some dust on their body, and their ribs were also like out because of malnutrition. ये पिक्चर देखने के बाद स्टीव जॉब्स को तो बिलीफ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि one is Steve Jobs is in America, so Steve Jobs have never heard of poverty. He's a kid, and at the same time, poverty you can understand, but you're not having food for many days. You don't even have clothes. As a kid of 10-year, 11-year-old, Steve Jobs in USA could not even believe that. So उन्होंने क्या किया, ये पिक्चर लेके, ये न्यूज़पेपर लेके उनके पापा के पास गया और उनको पूछा कि ये सच स्टोरी है क्या, ये ऐसे हो सकता है क्या. तो स्टीव जॉब्स ने पापा ने बोला कि ये सच में ऐसे हुआ है. And there are some countries in the world where poverty is a big problem. But Steve Jobs ने believe नहीं किया. And then what happened? He went to the church on that Sunday. वो priest के पास गया और वो prayer के बाद, priest के पास जाने के बाद, he said that, he asked the priest that I'm carrying a newspaper of last week. I wanted to ask you one question. Can you see this picture and tell me whether this is a true picture or not? Because I can't believe that there are people in the world who does not have food and clothes. So वो पिक्चर देखने के बाद प्रीस्ट ने बोला कि ये सही स्टोरी है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, राइट. देयर आर सम प्लेसेस इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड वेयर they don't have food, they don't have clothes, and they go through immense poverty. तो स्टीव जॉब्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा प्रीस्ट से, and that was the turning point of Steve Jobs' life. The question was like this. He asked the priest that all throughout my last 10 years, you and my parents were telling that जीसस क्राइस्ट विल टेक केयर ऑफ एवरीवन. इतने सालों से आप और मेरे पेरेंट्स मुझे ये समझा रहे थे कि जीसस क्राइस्ट सबका ख्याल रखेंगे, बट जीसस क्राइस्ट सबका ख्याल रखेंगे तो ये दो बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रख रहे? व्हाई इज दैट जीसस क्राइस्ट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दीज टू किड्स? एटलीस्ट दे शुड बी गिवन फूड. एंड सडनली द प्रीस्ट डिड नॉट हैव एन आंसर. एंड स्टीव जॉब्स सेड दैट दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज आई न्यू दैट फ्यूचर इज इन माय हैंड्स. My destiny is in my hands. अगर मैं बिलीव कर लिया कि मेरे लिए कोई और हेल्प करेंगे, right, and if I don't do what I am supposed to be doing, I will never succeed in my life, is what I understood. So as a great lesson from this story, I think all of us, हम सब लोग को ये दिमाग में रखना चाहिए, भगवान हमारे साथ होगा, बट अगर हमारी डेस्टिनी, हमारी फ्यूचर अच्छा होना है तो हमको खुद लिखना ही पड़ेगा. Thank you so much and have a great successful year ahead.